So we'll see weathering. So weathering means simple the breakdown of rocks. Simple we can say breakdown, or you can say disintegration. Disintegration of rock. So when rock subjected to external condition, when rock exposed, they will break down, they will disintegrate. So this is simple called as your weathering. So this is essentially a surfacial process. If a rock present beneath the surface, below the earth surface, it will not undergo any weathering action. It will only weathered, or you can say it will be broke down when it will expose to the surface. So after exposing to surface by various agent, it can disintegrate into smaller pieces. That is called as your weathering. Simple breakdown of rock is called as weathering. So the breakdown of rock, suppose we have a rock here. So it breaks down to smaller pieces like this. So these smaller pieces, it may deposit at the place of weathering, at the place of weathering. So they deposit at the place of weathering. If they will deposit at the place of weathering, it is called as your in situ. This is called as your in situ. If they deposit elsewhere by drifting, then it is called as your erosion. It is called as your erosion. So the disintegrated rock, they can deposit at the place of weathering, or they can deposit elsewhere, or at some place distant from the weathering region. Suppose we'll take the example, suppose a rock that broke on the top of the hill, then it can deposit on the top of the hill. Sometimes they fall downward, sometimes they move downward, deposit at the foothill of the mountain. एग्जांपल तुम्हें कौन पथर जो भांगुचे ऊपर बेले बेले मास वेस्टिंग हो जाउछे देखो तळु खसी आसुची पथर गुड़ा से आसिक डिपोजिट कोठी होउछे फुटहिल ले होउछे तो जो जगह से वेदर हैला ताठू अलग जगह से आसिक डिपोजिट हो सो रॉक once weathered it can deposit at its place of weathering called as in situ. If they drifted, it is called as your erosion. So weathering and erosion. So weathering plus erosion. Weathering plus erosion combinedly called as denudation. Denudation. This is a process that reshape the earth, that destroy the exposed rock surface. जेकोसी जगह पथर फथर जो सब तुम्हें जो पहाड़ फाड़ रिजन को जाओ गोड़ी फोड़ी पड़ता है गोड़ी गुरा कौट अच्छे पथर बड़ पथर भांगी गोड़ी प्रोड्यूस. So these weather product, the weathering thing is also called as sediments. You can call them as sediments. So sediment can deposit one place or it can drift it. That is called as your erosion. If they move out from the weathering place, it will be called as erosion. Combinedly they produce your denudation process. Any your river like thing, glacier, then wind, they do weather, they do transport. So any transporting deposition is erosion, any disintegration it is weathering. So they will erode, they will disintegrate, and they will deposit it in elsewhere. So during weathering or during transportation, during erosion, they reshape the earth.
The external surface of the earth, they produce different features, that is called as geomorphic features or geomorphic landforms. तो वेदर जो होची इरोड जो होची जाइन कोठी डिपोजिट होची सब वेरियस शेप आउ साइज रे डिपोजिट हुआ जोड़ा तुम होल जियोमॉर्फोलॉजी रे पढ़ियो कौन पढ़ियो रिवर द्वारा केमती हुए विंड द्वारा केमती हुए ग्लेशियर द्वारा केमती हुए ये सब पढ़िबा को जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट. Then comes to types of weathering. So weathering can be classified into three types. Mainly it can classify into three types. One is physical weathering. Physical weathering. One is chemical weathering. So one is physical weathering, one is chemical weathering, one is biological weathering. So physical weathering, it is simple the mechanical disintegration of rock. It is mechanical disintegration of rock. Suppose we have a rock, so we can disintegrate rock, we can break down the rock by using a hammer. Simple. So if you broke that rock into smaller pieces, it will be a mechanical weathering. So that done by your river, glacier, wind, they just disintegrate the rock. Suppose we have a brick-like thing. If you disintegrate it, it will become powder form, or it will become smaller, or it will become smaller in size. But in case of mechanical weathering, the main thing that the composition will not change. The composition will not change. So when a rock is weathered by mechanical means, the composition does not changes. The main important thing, composition of rock does not change. कंपोजिशन चेंज कौन हुए नहीं तुम यदि पत्थर गोटे आनला भांगले से गुंड हो गला आ पत्थर रे जहाँ एलिमेंट थी से गुंडर भी सैया थी तुम इटा को भांगले इटा गुंड पाइब तो से जदि तुम्हें मेकानिकाली ब्रेक कर कौन सी चेंजेस हुए ना. Then comes to chemical weathering. You can say chemical disintegration. Disintegration which involves some reaction where will require either water, carbon dioxide, oxygen, any solution. All these type of thing also produce chemical weathering. Like something will dissolve in water. Something is dissolved in water. Example, you can take your calcium carbonate. It will dissolve in water. This is called as your chemical weathering. So CaCO3, it will convert to CO2, calcium oxide, calcium dioxide. CaCO3, when it will dissolve, it will convert to CO2, CO like this. They will disintegrate. So the chemical species within the rock, they will disintegrate. This is called chemical weathering. So that's why during chemical weathering, this CaCO3, it will convert to CO2 and CO. So the composition will change. So during chemical weathering, composition will So there are different types of chemical weathering also. There are different type of physical weathering. We will discuss that in physical weathering classification and chemical weathering classification. Then comes to biological weathering. So biological weathering, it is disintegration of rock by organisms. So organism means so different organisms, they bore hole on rock. By doing this, they will erode that rock. Some plant root, they penetrate through the rock.
they will fracture the rock. तो ऑर्गेनिज्म अच्छा कौन करते जो भाया मटिरे खोलिक रुहति से भाया पथर भी खोलिक रुहति पथरटा खोलिले कौन हम से नष्ट हे ना डिसइंटीग्रेट हो ना नहीं पथर किसी पार्ट तुम नष्ट करदेला ना कि पथर भितर जो गछर चेर पशि जाए से चेर बढ़े से पथरटा अधिक फाटी है सो बाय इन फिजिकल वेदरिंग rock can disintegrate by organism when they bore hole on the rock. By that process, they will disintegrate the rock. Also, when plant root penetrate to the fracture of the rock, when the plant root will thicken, it will widen the fracture. It will break the rock. So these are biological that we will study the elaborate. That is what are the different types of biological weathering. Biological can be biophysical, biochemical. That will study in biological weathering classification. So we have three types of weathering: physical weathering, where mechanical disintegration of rock will occur; chemical weathering, where chemical disintegration of rock will occur; and biological weathering, where the weathering will occur by biological activity or by some organism. Factors affecting weathering. What are the different factors that will affect the weathering process? Suppose a rock. Suppose we put a rock in our home. Suppose we have different rock in our museum. Suppose so those rock will not disintegrate because they are in an environment where they are not affected by any physical process or anything. Suppose I will put that rock in a mountain region, then in some day it will roll down to the bottom. During rolling, it will disintegrate. तुमको पत्थर को नहीं से भाया कंडीशन रे रखा पड़ो जोटा कि वेदर करे. So there are different factors that they facilitate the weathering action. They ease the weathering action. Suppose we have a rock. So at how easily we can weather that thing, or whether it will be difficult to disintegrate that thing, that depends upon various factors. तुमको गोटे पूरा पत्थर तुम केतक देखिछ कि हाथ रे कि टिके पकेले भांगी जाए केतक जोर मारले जाए भांगे. तुम एग्जांपल नहीं जा कि इटा नहीं जा पत्थर नहीं जा दुईटा थर एग्जांपल हम नवा. इटा को तुम पके देले इजिली भांगी छ पर पत्थरटा को भांगी इटा भी क्ले रे तैयारी हिच. क्ले इज ए रॉक किंतु इटाटे सॉफ्ट এটা হার্ডর হব কোটা পথরটা পথরটাকে তোমাকে কোন জোরে মাটিলে ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ କିନ୍ତୁ ଇଟାଟା ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବ. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସେ ପଥର ଆଉ ଇଟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭିତର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିବ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ ପଥରଟାକୁ ନେଇକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲ ठीक अच्छे पूरा स्लोप रे रखदेल ताल से गड़ी भांगी जीव. तुम ईटा को नहीं कि पूरा पहाड़ टॉप रे रखदेल से गड़बनी भांगनी तमाने वेदरिंग हवा पाई कौन कौन फैक्टर रिक्वायर कर. मुझे गोटे पत्थर को एठी थोइबी ताल से सेमती रहिला से किछि हबनी तार मुझे एठी थोइ देबी से गली पड़ियो गड़ले भांगी जीव. विरोध नहीं तेणु वेदर हाँपाई डिफरेंट कंडीशन दरकार हो डिफरेंट फैक्टर तर से थोली फ्लैटर रीजन फ्लैट इज अ फैक्टर स्लोप रे थोली स्लोप इज अ फैक्टर. स्लोपटा कौन कर फैसिलिटेट कर वेदरिंग एक्शन को गोटे फ्लैटर रीजन सी रेजिस्ट कर वेदरिंग एक्शन सेम जिनस तुम्हें तो अल्टरनेट करदेव आपको स्लोप को नहीं आसो ताको फ्लैट को नहीं जोटा स्लोप रखो सेटा वेदर हो जोटा फ्लैट रहो सेटा वेदर हबा नहीं. सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदरिंग इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज योर एंडोजेनेटिक फैक्टर. वन इज योर एंडोजेनेटिक फैक्टर. और एक्सोजेनेटिक फैक्टर.
So endogeneity factors, it the factor that affects the rock characteristic. It is a rock characteristic. Okay, it is a rock characteristic. Exogeneity factor, this factor from external environment. You can say rock characteristic. You can take. We'll discuss elaborately now. What are the different endogeneity factor? So first, right. So there are different types of endogeneity factor. So we'll start from your rock strength, or you can say that hardness. So the simplest way, the softer rock, it is less resistant to weathering than a harder rock. Simple, you can say a softer rock is less resistance to weathering. So harder rock has more hardness, it has more strength, so it can withstand the weathering to greater level. Suppose we will take a harder rock, we will scratch that rock. We will take a softer rock, we will scratch that rock. The softer will easily weather. The softer one will be easy to weather, but the harder one it will be difficult to weather. তুমি পথর নেইকি ঘষিব তো সেটা বহুত দিন লাগিব ইରୋଡ଼ হওয়া। ନର୍ମାଲି ଶିଳପୁଆ ଦେଖିଛ ଆମର ଡେଲି ତାଦେହରେ ଥର ଆଗରୁ ଘଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ୱେଦର ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତୁମେ ସେଟା କ'ଣ ଇଟାରେ କରିପାରିବ ନା କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ରକରେ କରିପାରିବ, ତାକୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ରକ୍ ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ? କାରଣ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତୁମେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ଇରୋଡ଼ ହେବ। So simple in hardness you can say the more the harder the rock, the more resistance to weathering it is. Hardness means it is the strength of the rock. The strength it comes from its chemical characteristics, you can say its constituents, because rocks are consist of minerals. So ultimately the hardness of the rock it depends upon the hardness of the mineral. If it consists of harder mineral, it will be more resistance to weathering. So simply remember, harder rock will have more resistance than softer rock, or softer rock is more you'll say less resistance, or you can also use this more prone. More prone means easily weather. More prone to weathering means it can easily weather. Less resistance means easily weathered. Then comes to composition of the rock. So rocks, rock are consist of rock are aggregate of minerals. Rock are aggregate of mineral. So you can say the mineral constituent determines the weathering criteria. So this mineral constituent, it is the composition of the rock. A rock consists of what type of mineral? You can take the example of granite. You heard the name granite? Granite, it consists of pure quartz and plagioclase. We'll say marble consists of calcium carbonate. Quartz consists of granite consists of quartz and feldspar. So this calcium carbonate, it is dissolved in water. It can dissolve in water, so it will have less resistance to weathering. So that's why mineral constituent it is very important for determination of weathering criteria of any rock. So this composition or weathering criteria, it is defined by a series called as stability series. So the composition factor, what mineral will have greater resistance to weathering, what mineral have less resistance to weathering,
that is defined by Goldwich stability series. Then if a rock consists of mineral that is less stable, or that consists of mineral that is more prone to weathering, then rock is also more prone to weathering. Rock is also more prone to weathering. If a rock consists of mineral that has greater resistance to weathering, then the rock will also has greater resistance to weathering. So this series will tell you whether a rock will have greater resistance to weathering or less resistance to weathering. So this is your Goldwich stability series. So here you can say down the series we have taken stability increases. That means from olivine to quartz, or from anorthite to quartz. Your olivine, pyroxene, amphibole, biotite, then K feldspar, muscovite, quartz. This is albite, oleoclase, andesine, labradorite, bitonite, anorthite. So that means to top of the series, the mineral at the top of the series, they are least resistance to weathering, they will easily weather. So any rock consists of olivine, pyroxene, or this anorthite, bitonite, they were easily weathered. Rock, you say, you can say dunite, peridotite, those are type of rock. Then your basalt, those are consist of these olivine, pyroxene, and these bitonite, anorthite type of minerals. So they are very easily weathered. But any rock consists of these minerals. Your granite, it consists of K feldspar and quartz. So the very resistance to weathering. So in this series, quartz is most stable and olivine is least stable. Quartz is most stable mineral. So any rock that consists of quartz will be a highly stable rock. It will be highly stable rock. जो नई पाखे सब छोट छोट गोले गोले पथर जो पाउच से हूँ क्वार्ट्ज से हूँ कौन क्वार्ट्ज से सब गोले भी हो जाए कहीं एत गड़ी 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 आसते रिवर से गोले हो जाए नेचुराली से गोले हमें जो भांगती से गोले ही धीरे 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 से राउंडेड हो तुम बढ़िया राउंड सेप्र स्पेरिकल सेप्र तुम्हें पाइब हूँ कौन क्वार्ट्ज. So as we go down the series, the stability gradually decreases. That means you can say olivine, it is less stable than pyroxene, or you can say pyroxene is more stable than olivine. Amphibole is more stable than pyroxene, and these are similar. You can say olivine is as stable as anorthite or bitonite. Then K feldspar, it is more stable than biotite. Muscovite is more stable than K feldspar. Quartz is the most stable mineral. So according to this, you will determine the composition of the rock. And the rock consists of this top mineral. They will be least stable to weathering. Rock consists of the bottom mineral. They are highly stable to weathering. Then comes to color. Then how color will affect the weathering? We'll take the darker color rock and lighter color rock. So you will take a darker color rock. So darker color rock can absorb more heat. It can absorb more heat. If it will absorb more heat, something will absorb heat, it will expand. It will expand. So darker color rock, तुम जान जो कला पिंधे खरारे कौन पाई अधिक हिट से टाणी छात उपर नॉर्मली धला कलर दि जाए कहीं लाइट को से रिफ्लेक्ट करे जो लाइटर कलर हम से लाइटा से रिफ्लेक्ट हो कला हम से कौन से आब्जर्व कर. So the lighter color rock, it has a less absorption capacity. Darker color rock has more absorption capacity. So darker color rock, it can absorb more heat, means it can expand more. There is a chance of developing fracture, or there is a chance that it will disintegrate easily.
at a more greater rate than a lighter color rock. So here more darker color rock like more absorption capacity, more heat absorption capacity. So it will expand more and produce fracture. So once a rock will produce fracture, it will become weaker. So it can easily weather. So it will expand more and produce fracture. But lighter color rock has less heat absorption capacity. So less chance of producing fracture. So that's why darker color rock are more prone to weathering than lighter color rock. So darker color rock more prone to weathering. So if you have a lighter color rock, it will more prone to less prone to weathering, or lighter color rock are more resistant. Then according to Goldfish series, the top mineral olivine, barium, those are always dark color. So dark color mineral they also present at the top of the Goldfish series, and lighter color mineral you will find at the bottom of the Goldfish series. That also a reason they can easily disintegrate. Then comes to homogeneous and heterogeneous rock. Suppose we have a rock that consists of a single type of mineral. We have a rock that consists of multiple minerals. When they will absorb heat, so different substances different heat absorption capacity. If different substances have different heat absorption capacity, then different substance will expand at different rate. Suppose गोटे अधिक heat absorb करछ माने से अधिक expand करिवो, जोटे कम heat absorb करछ से कम expand करिवो. So if a rock is heterogeneous, then it will show unequal expansion. It will show unequal expansion. If a rock is homogeneous, then all the mineral will expand in same rate. So the expansion will be homogeneous. The expansion will be equal. So suppose we have a rock like this. So it is expanding equally in all directions. And we have a rock here. It is expanding more in this direction than in this direction. So because of unequal expansion, it can develop a fracture. It can develop a fracture. If equally expand करछि equally contract करछि ताले सेठी fracture develop होनी को जागा अधिक पड़ाला तो सेटा कोन हबो other to detach होबा चेष्टा कर. So unequal expansion produces fracture within a rock, but equal expansion does not produce any fracture. So if any rock developing fracture, it will be weaker, it will easy to disintegrate. So that's why homogeneous rocks are more stable than heterogeneous rock. So homogeneous rock it shows equal expansion, throughout rock. Because it consists of same mineral, so all will expand at equal rate. So less chances of developing fracture. Then heterogeneous rock shows unequal expansion, more chance of developing fracture. So homogeneous rock, because of it is so equal expansion and contraction, it is less prone to weathering. It is more stable than the heterogeneous rock. So you can write down
Homogeneous rocks are more stable than heterogeneous rocks. Then comes to weak plains. So weak plains, these are your these fractures or joints that develop within a rock. Suppose we have a wall, there is a fracture on the wall. So you'll say that wall is weak. Wall कांथरे तुम फाटा हो गला कि कौन गला तुम कौन गला कांथरा weak है. So that these are the structure, the fracture. You can say weak plains are your fractures, joint, cleavage, fault are weak plane in rocks. So weak plane always, weak planes decreases the strength of the rock. Decreases the strength of rock. Even if a harder rock, if it has joints, it has fractures, it can easily disintegrate. Joint fracture माने तुम्हें इम्ति भागो कि हम जो कुरकुरे खाऊँ तादरे गोटे लेबलिंग थे से जगह तुम्हें चिरी देले इजीली चिरी जो अदर को जगह चिरी चिमा इजीली चिरी है वो कि जोटी पैकेट रो जॉइंट दिए थे से जगह चिरी तुम्हें इजीली चिरी जो जगह जॉइंट है से जगह वीक करता है हेले तुम्हें जे कि पत्थर ब्रेक करा जाए যদি জয়েন্ট সারফেস थियो তাহলে ইজিলি তুমি তাকে ভাঙি দি পারিবো যদি জয়েন্ট সারফেস নথিবো তাহলে ইজিলি ভাঙি হবো না তো আগে তুমি এলাবোরেটলি সব পড়িবা আগু হোয়াট ইজ জয়েন্ট হোয়াট ইজ ফল্ট হোয়াট ইজ ফ্র্যাকচার এই সব জিনিস so the weak planes generally decreases the strength of the rock so rock containing any weak plane will more prone to weathering it will be more prone to weathering rock containing any weak plane it will be easily weathered. So we will say about exogenetic factor. What are the external factors that will affect the rock? So external factor like your environment condition or its slope condition. So first we will see relief. So relief or we will say slope. So relief means simple height difference between 2 points. Suppose this is your ground, something is at this much height, something is at this much height. So the difference between the height between 2 points, it is called as your relief. So relief means simple difference between a difference of height between 2 points. So this is one point, this is another point. So the difference between the relief it is called as your so difference between height it is called as your relief. Suppose we'll say a mountain region like this. So mountain, the top of the mountain and bottom of the mountain, they are having this much height difference. This is called as a simple relief. What is the relief difference between 2 points? How the relief changes within a region? That term we will use. Then this is called as your slope. The more the relief difference, the more will be the slope. Suppose it will take 2 points. This will be the difference between relief. Here we are taking 2 points. Relief difference is this much. The more the difference in relief, the more the slope will. So if slope will increase, anything on the slope is it unstable. It is unstable. So it can easily move along the slope. It can move along the slope because of gravitational force. Because of
gravitational force, because something is here means it is retained by frictional force, by its own weight. When gravity will overcome these forces, it will gradually move downward. तो सब न्यूमेरिकल तुम कर सब +2 रे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये सब जो न्यूमेरिकल एंगल रे रहिले कि से वाला जिनस एटी भी तुम्हें कहि पारि. So it is at some height. So that means the more the slope or the more the relief difference, the more intense the weathering will be. So you can write down the relief difference. It is directly proportional to the weathering intensity. Relief difference is directly proportional to the weathering intensity. मैंने जिते अधिक तुम स्लोपी जगह हम से अधिक तुम वेदर हमारा चांसेस अच्छे. जिते अधिक स्लोपी जगह हम से अधिक वेदर हम. सो सिंपल जदि तुम पाखे रिलीफ डिफरेंस अधिक अच्छी, इफ यू हैव ए ग्रेटर रिलीफ डिफरेंस then the weathering action will be more. Any rock at a slopy region, it will be weathered easily. So that's how a external factor that will affect the weathering, that will control the weathering. The same type of rock, if it in different relief condition, it will erode at different intensity. जदि गोटे रॉक तुम जेंटल स्लोप जगह रख से धीरे धीरे गड़ो, स्पीड टा कम हम. बहुत स्लोपी रखले स्पीड टा अधिक हम. जिते स्पीड रे जीव सेते स्पीड रे से डिस्ट्रॉय हम. गोटे फैक्टर है. Then comes to vegetation cover. So if a region it is covered by vegetation or covered by plants, तो vegetation माने कौन plant पे. तो plant जदि अच्छी ताले कौन हो weathering easy हो ना difficult हो. Normally तुम्हें जो पढ़ुचो soil erosion रे कि आमे गछ कम पाई लगाते. soil erode हबो नाही बोली. soil erode हबो नि कहीं से को माटी की जागुड़ी धर है. तो यदि वेजिटेशन कवर कथा हम कहते, सो इन वेजिटेटेड रीजन, सो द रॉक लेयर इट इज कवर्ड बाय योर प्लांट और योर स्मॉलर plants or grass type of thing. So it is covered by these plants, so it is protected from the sunlight, it is protected from everything. So that vegetation cover will decrease the mechanical weathering. Vegetation cover कौन करे? Mechanical weathering कम करे. It will decrease the mechanical weathering, but it can facilitate biological weathering, like plant roots can penetrate through the rock so that they can destroy the rock. Right, same thing here. So vegetation cover can facilitate your biological weathering. Okay, biological weathering. It will protect the soil only. It will protect the soil. So plant cover also you can write down protect the soil erosion. So vegetation cover, it will protect the weathering, protects from mechanical weathering, but you will get chemical biological weathering. And basically due to vegetation cover thai, mostly in that region you will find rainfall, and where there is rain available you will find chemical weathering. In dry area you will never find chemical weathering, or in colder area, in glaciated area you will never find chemical weathering. So another same thing here, this aspect. Aspect means the two slope of a mountain. There are two slope of a mountain. One, it is facing towards the sun actually. Another, it is on the opposite side of the sun. So the slope that is facing towards the sun will grow more plants than the other part. So this will remain barren, there will be no plant here. This will covered with plant. The face that is covered with plant, it will be more protected than to mechanical weathering than this part. So this part will weather faster rate than this part. This is called your aspect. This is called your aspect.
So लिख दियो direction which slope is facing. So different type of weathering that affected by different climatic conditions. So we'll take two conditions. One is dry condition, one is wet condition. Where there is abundant rainfall, we'll get, and where there is, we'll get no rainfall. So generally in dry area where there is no rainfall, weathering occur by mechanical process. Mechanical process like physical breakdown or your if there is expansion contraction because of sunlight. So those are the main reason. जोटी तुम्हारा सन कौन कि बेसी रेनफॉल हो. Where there is rainfall, then you will get more chemical weathering because the availability of water. So if water is more available, then for a reaction or for solution you will get abundant water, then it will produce chemical weathering. So see tomorrow chemical weathering अधिक होगा. So this is a chart that different explain different type of weathering at different condition. So this is your annual rainfall. This is annual rainfall. Where rainfall is more, you will get strong chemical here. You will get strong chemical weathering. So this red part, it is strong chemical. And if temperature fall below minus degree or below 0 degree, here you can see in this region there will be no weathering because all the soil or rock they are protected by glacial ice. If the glacier will move, जोटी तुम्हारा permanent ice cover न थाए, if glacier will move, that will erode. That will consider as mechanical. So with you can say as rainfall will decrease, then weathering will also decrease. जितने rainfall कम हो, उतने weathering कम. So it देखा, it is more moderate chemical weathering. This part moderate chemical weathering. এই পট আছে strong mechanical, moderate mechanical, slight mechanical. সেটা কোন কন্ডিশনে আসছে? Mostly dry देखो. एटू टेम्परेचर रेनफॉल जते डिक्रीज करी कर चलियो, मेकानिकल कंडीशन सेते अधिक आसी. ता सहित जदि इफ तुमर वाटर जदि टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री अछि ताले ग्लासियल एक्शन में बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग इरोजन हम. ता सहित हमर नॉर्मल जो रीजन आम कहूँ आम ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन अच्छा आम आनुअली के वर्षा दिन अच्छी खरा दिन अच्छी. तो आम वर्षा दिन जो कौन मेकानिकल केमिकल वेदरिंग हम बेसी, खरा दिन मेकानिकल वेदरिंग हो पार है. तो आमर यही रीजन आम कौन अधिक जापार आम अधिक एक्सपोजर ना. तुम्हें पहाड़ आड़ गले से एक्सपोज हो ना आमर गोटे सॉइल कवर फास्ट रपर जाइए रॉक रहा. तो रॉक वेदर कौटी हम जो एक्सपोजर अधिक हो. तो एक्सपोजर जनरली अधिक कौट हुए माउंटेन रीजन. माउंटेन टा हूँ गोटे एक्सपोजर. तुम्हें नॉर्मल कौन प्लेन लैंड रे कौन देखुच पत्थर अच्छी पहाड़िया जगह जो जाऊच से तुम्हें पाउच हो कि पत्थर गुरा तुमको देखा बाहर को. ना तुम गाँव गले तुम बिल पाच कौन पाच सॉइल पाच. से रॉक कौन इरोजन हम से रॉक इरोजन सॉइल इरोजन है. रॉक इरोजन भाव कले एक्सपोज करा दरकार. एक्सपोज करा मोस्टली माउंटेन रीजन अधिक एक्सपोज करते से माउंटेन टॉप रे सब टेम्परेचर कम थाए एंड से ग्लासियल एक्शन जो मेकानिकल वेदरिंग अधिक हुए. से तुम कि -10 हेले भी ये टेम्परेचर मेकानिकल वेदरिंग अधिक हो. जिते टेम्परेचर बढ़ो भी से केमिकल वेदरिंग अधिक हम. जिते टेम्परेचर बढ़ो से केमिकल रिएक्शंस पूरा स्टार्ट है. सो देयर इज अ रूल आल्सो हियर. तब कहते वैन हॉफ रूल. वैन हॉफ रूल फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. जदि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज है तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स. जो रेट रे केमिकल रिएक्शन चली था तार डबल है ना जदि तुम टेम्परेचर इंक्रीजेस 10 डिग्री. सो क्लाइमेट एमती अफेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हें क्लाइमेट लिख पार रेनफॉल लिख पार जहाँ भी लिखली से एका जिन आम बेसिकली रेनफॉल कौटी हो रेनफॉल होनी ता बेसिस रे कहूँ. सो एनुअल रेनफॉल अनुसार तो ये तुम जदि रेनफॉल अधिक हो केमिकल वेदरिंग हम. यदि रेनफॉल अधिक होनी टेम्परेचर कम अच्छी ताले मेकानिकल स्ट्रांग मेकानिकल वेदरिंग हम है. सो यहाँ हूँ तुम क्लाइमेट कंडीशन. नेक्स्ट कम सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया
सो गोटे पार्टिकल जिते अधिक सरफेस एरिया नब that will expose more to the sun, that will expose more to the weathering surface. So generally गोटे कोर्सर पार्टिकल जदि गोटे कोर्सर पार्टिकल अच्छे सपोज तुम लडू खाऊ लडू को थोब से जी जगह नब लडू तो भांगी देकी से कौन तैयारी बुंदी तैयारी ताको से जगह नब कि अधिक जगह नब जोटा बुंदीटा है अधिक जगह नब लडूटा कम जगह नब से बहुत छोट स्पेस टे नब सो जिते छोट स्पेस नब तापर से कम सन रे पड़ो वेदरिंग एक्शन तापर से कम हम जिते सरफेस एरिया बढ़ो से अधिक वेदरिंग एक्शन हम सो जिते सरफेस एरिया हम से मोर वेदरिंग हम जिते सरफेस एरिया हम दैट इज मोर वेदरिंग सो पार्टिकल साइज जिते इंक्रीज कर इट विल जिते डिक्रीज कर से सरफेस एरिया को हम बढ़ सो से तुम वेदर अधिक हम सो सरफेस एरिया आम फास्ट मेंशन करवा सो सरफेस एरिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेदरिंग इंटेंसिटी जिते अधिक तुम सरफेस एरिया जिते अधिक सरफेस एरिया हम से अधिक वेदरिंग हमारा चांसेस अच्छे तो जोटी कि आम लिख पार फाइन ग्रेन takes more space than coarse grain. So जो फाइन ग्रेन रॉक था से अधिक स्पेस नब दैन कोर्स ग्रेन रॉक फाइन ग्रेन गुरा अधिक वेदरिंग हबार अच्छे दैन कोर्स ग्रेन तो एटा सरफेस एरिया वेजिटेशन कवर तुमको कही इंपोर्टेंट हूँ टाइम सो टाइम द मोर द टाइम ए रॉक विल एक्सपोज टू द सरफेस जिते अधिक टाइम गोटे सरफेस को सी एक्सपोज होते अधिक वेदरिंग एक्शन हो पार से अधिक यूरोड हो पार धर एग्जांपल तुम लुहा जो लुहा को तुम बहुत समय बाहर खाई रस्ट लगे दैट इज ए टाइप ऑफ वेदरिंग से टाइप ऑफ वेदरिंग तुम लुहा लेयर कौन हम छाड़ी तो सहीटा को आम कहते कौन कि जिते अधिक टाइम पर्यटन तुम लुहा रख गोटे गोटे टाइम आस लुहा को बेंड करदे बेंड हो भांगी पूरा जल तो जिते अधिक टाइम पर्यटन आम एक्सपोज करके रखा से अधिक सी इरोड हम सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेदरिंग लॉन्गर टाइम इट विल एक्सपोज लॉन्गर विल द डिग्री ऑफ वेदरिंग सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग लिखो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्राक्शन बात आम कही पार फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन सो इट इज ए मेकानिकल वेदरिंग प्रोसेस एबे आम लिखा सब जगह क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग है लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग सो इट इज ए टाइप ऑफ तुम क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग where you can say thermal expansion and contraction or physical thawing action, freezing and thawing action. First thing, if a rock is there, so it will experience pressure, absorb heat from the sun. First heat absorb करो sun रो heat absorb कले तापर से expand करियो जेतरे नाइट टाइम रे कौन हुए टेम्परेचर कमी जाए सी पुणी कंट्राक्ट करे ताको हम कहते थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्राक्शन ठीक अच्छे जो थर्मल एक्सपेंशन कंट्राक्शन रॉक रे फ्रैक्चर डेवलप हुए तो तुम वेरिएशन इन टेम्परेचर कही पार सो जो ड्यूरिनाल वेरिएशन कहते ड्यूरिनाल वेरिएशन माने गोटे डे रे केमिति टेम्परेचर वैरी करुछ गोटे डे रे एक्सट्रीम टेम्परेचर जाउथबो 50-60 डिग्री जाउथबो पुनी तापर राति रे कोन 0 डिग्री तळु पळे आस्तो एभला टेम्परेचर वेरिएशन ड्यूरिनाल वेरिएशन जदि इज लार्ज then rock can develop fracture because of thermal expansion and contraction because of thermal extension expansion and contraction so thora
डे टाइम रे टेम्परेचर अधिक होला, इट विल एक्सपांड लाइक दिस, इट विल एक्सपांड। ठीक अच्छे। नाइट टाइम रे टेम्परेचर कमी जीवो, से पुणी पुणी ओरिजिनल को कंट्रैक्ट कर। तो ये जो एक्सपेंशन और कंट्राक्शन जो आधार इन सब फ्रैक्चर डेवलप हो, फ्रैक्चर डेवलप हो देखो सब फ्रैक्चर डेवलप हो। सो फ्रैक्चर डेवलप हेले रॉकटा वीक हो, रॉकटा वीक हो ता सहित जदि से जगह वाटर अवेलेबल थिबो ताले से फ्रैक्चर रे एक्युमुलेट कर है। यदि वाटर अवेलेबल अच्छे सपोज गोटे रॉक अच्छे एमती एथरे फ्रैक्चर है, ठीक अच्छे एमती गोटे फ्रैक्चर हो जाता एंड द फ्रैक्चर इज फिल्ड विथ वाटर। सो जहाँ फ्रैक्चर क्रिएट है, इफ द फ्रैक्चर fill with water freezes। तो गोटे फ्रैक्चर तादरे वाटर फिल्ड हो जोटा आम कहली गोटे रात दिन में बहुत अधिक टेम्परेचर पड़े, रात टेम्परेचर 0 रु कम पड़े माने वाटरटा कौन हम आइस हो, वाटरटा फ्रीज हो। फ्रैक्चर फिल्ड विथ वाटर फ्रीजेस देन the fracture will expand, fracture will expand। why कौन भाई फ्रैक्चर एक्सपैंड करियो, बिकॉज जिते बड़े वाटर टा फ्रीज हुए इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 9%, जिते वाटर टा फ्रीज हुए है ना। सो एटा कौन पाई हुए, व्हेन तुम्हारा वाटर convert to ice, its volume increase by 9%। तार वॉल्यूम का 9% बढ़ी जीव। तो वॉल्यूम 9% यदि बढ़ी जीव ताले आकु कौन दरकार अधिक स्पेस दरकार एक्युमुलेट हवा पई, से फ्रैक्चर टा कौन आउ टिके वाइडेन हो, फ्रैक्चर कम आउ टिके वाइडेन हो, अधिक चांसेस ब्रेक हो। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज अकर बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन तुम कहि परिबो और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो। तर वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन केमि हुए सब आमर जहाँ भी रॉक प्रेजेंट अच्छी सब आम गोटे लेयर ऑफ रॉक ये प्रेजेंट अच्छी, यहाँ हूँ ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस। सो आ ऊपर मटेरियल रही थे, आपर डिफरेंट मटेरियल थे, तो ये इतने तले रही मैंने आ ऊपर प्रेशर पड़ुଛି, ए रॉक ऊपर कौन पड़ुଛି प्रेशर पड़ुଛି, जी भी डेप्थ रहिबो तापर प्रेशर पड़े, राइट जी भी डेप्थ रहिबो तापर प्रेशर पड़े। तो जदि तुम गोटे जिनस को प्रेशराइज कर रखुच, जदि गोटे जिनस को आम प्रेशराइज कर रखुंती देन ग्रेजुअली तापर प्रेशर तुम्हें रिमूव कर दो। प्रेशर केम रिमूव हुए, जेहेतु आम ग्राउंड सरफेसटा वेदर्ड हुए सब एगुरा सब बाहर जाए धीरे धीरे वेदर्ड होगी, इटू जो किसी मटेरियल बाहर जापर प्रेशर कमी ये टी ऊपर उठे तुम धर जन धर चापिकी धरच, सी भी ऊपर को उठा चेष्टा करते तुम चापिकी धरच, तुम टे ढिला कले सी ऊपर उठी ना नहीं, से भाया जिनस ये चलती कि आम कौन ये माटी तौक को आम जिते डेप्थ को जा पथर गुरा से अधिक स्ट्रेस से प्रेशर रे रोथे। तो जिते बड़े ऊपर पार्ट गुरा वेदर्ड होगी बाहर माने आंको प्रेशर टी कम, से ऊपर को राइज करेंगे। तो ऊपर को राइज कले कौन हुए ना ये सब फाटी जाए, तार रॉक रॉकटा कौन ये सब ब्रेक कर जाए, तुम्हें फ्रैक्चर कह सीट जॉइंट बोली कौन कौन सीट जॉइंट। तो जदि तुम्हारा ए रॉक एट डेप्थ गोटे रॉक गोटे डेप्थ रे अच्छी डेवलप फ्रैक्चर डेवलप योर सीट जॉइंट तुम कह पार सीट जॉइंट्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन।
यदि ओभरबर्डन तुमर ओभरबर्डन माने आपको कहते आ ऊपर जहाँ रहा ताको ओभरबर्डन कह तापर जहाँ रहा से रिमूव हवा ताले ये कौन प्रोड्यूस करबो सीट जॉइंट प्रोड्यूस करबो हला फेनोमेनन इज कॉल्ड एज योर एटा कहते का अब कहते प्रेशर रिलीज फेनोमेनन प्रेशर रिलीज मेकानिज्म तुम कह पार हाँ बरा प्रेशर रिलीज मेकानिज्म जो कि प्रेशर कौन हो रिलीज हो देख जो अभी तो शीत दिन आइले तुम स्वेटर फेटर सब एम जोर चापिकी धरती छाड़देव सी आपे उठी एमती हुए से भाया टाइप जिनस जो मैंने राइज करेंगे एम तो पूरा जो इलास्टिक ये मटेरियल नुह ना ब्रिटिल मटेरियल ये फाटीजी देख फाटीजी तो फाटले प्रेशर रिलीज जो मेकानिज्म जो है so it will develop fracture joints once it will develop joint यदि से joint develop कर दरा मन now it is weaker when it will expose to the surface gradually it will expose to the surface and when it will expose to the surface it will easily weather so the joint development जहाँ होगा joint will weakens the rock and it can easily weathered लेखा destroy लिख पारिबो जाले easily weathered है जाए destroy so जितना ठीक weathered हुए it will erode layer by layer तो मुझे बड़ा जो रॉक का देखेली layer by layer कि जो बड़ा आम एग्जांपल नहीं पारिबा ब्रेड देख ना ब्रेड रो जो बड़ा जो कटा हो ब्रेड आजिकल ना कि गोटे लेयर से लेयर बाय लेयर छाड़े से दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इट इज कॉल्ड एज योर दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएट हवा माने जो चोपा छाड़े गोटे गोटे लेयर ताको कहते एक्सफोलिएशन कौन तापर नेक्स्ट मैं इसको ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल फ्रीजिंग वाटर हम ऑलरेडी कहि सारछन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल सो ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल मींस जदि गोटे रॉक रे फ्रैक्चर होछ माने तुम मांकड़ा पत्र देखछ मांकड़ा पत्र सब होल हो था नहीं जदि जहार मांकड़ा पत्र बहुत दिन होला बाहर पड़े से मांकड़ा पत्र से होल ले कौन पसी जीव धीरे धीरे कादुओ डिपोजिट हवा स्टार्ट हो देखछ ना नहीं ता भीतर कादुओ पसेन ना देखिनु तू जोटी गात गोटे कर दे किसी दिन पर बंद हो है कि कहीं जोटी फ्रैक्चर जॉइंट किसी भी ओपन स्पेस है माने वाटर आकोमुलेट कर वाटर खाली तो तुम्हें आम कौन मिनरल वाटर कहते वाटर बहुत कनसिस्टेंट अच्छे तो ये यहाँ गोटे रॉक अच्छी ये जोटा कि यहाँ तार फ्रैक्चर रीजन तार कौन फ्रैक्चर रीजन तो आधे कौन है वाटर आकोमुलेट करके सब क्रिस्टल डेभलप हो जाए तुम विश्वास हो बट एमती हुए है एवं तुमको विश्वास हेनी आगू हम तो आधे देख ये बढ़िया से क्रिस्टल डेभलप कर सेप साइज है तो यहाँ गोटे कौन थी फ्रैक्चर थी आधे वाटर आकोमुलेट करके सेकेंडरी ग्रो हो मेन रॉक मिनरल हूँ यहाँ है आधे देखो ये फाट अच्छे एमती फ्रैक्चर अच्छे तो ये जो फ्रैक्चर जगह आकोमुलेट कर ग्रो करेंगे ये ग्रो करेंगे तो आपको जगह दरकार ना नहीं एम कौन कर वाइडेन करेंगे फ्रैक्चर अल्टीमेटली ब्रेक करदे जदि ये सफिशिएंट सॉल्यूशन था भांगी जाता ये से पर्यटन ग्रो करें जो ब्रेक कर सो ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल फेरा पोर्स आउ जॉइंट्स आउ फीचर्स पोर माने होची खाली गात भरा जोटा तवा पोर स्पेस जॉइंट फीचर्स है सब सेम भाव दिया एबे भाई थ्रू प्रेसिपिटेशन वर्षा पानी तार जो बसे से तुम मिनरल रिच वाटर थाए सो से गुरा कौन करती ये जिते बड़े आकोमुलेट हुए से माने ग्रो करती ग्रो कले फ्रैक्चर को वाइडेन करेंगे डिसइंटीग्रेट करेंगे रॉक जो बड़ा फ्रीजिंग था खाली वाटरटा कौन आइस जाऊला सेम फेनोमेनन बट ये मिनरल डेभलप हाँ मिनरल डेभलप
तो ये ହେଉଛି ତୁମର ମେକାନିକାଲ ୱେଦରିଂ।